Everyone, I'm Shivali Singh, and this is my YouTube channel Coding Made Easy. So, as in my prior video, I have discussed how to how to install Python and how to set up the environment for coding. And in this video, we'll be starting the series for Python to master Python from the very scratch to the master level. Okay, so the first video will be on some basic knowledge of Pythons, like what is comments, what are variables, what are keywords, etc. In the series, you will be getting handwritten notes, which will make easy for you to understand each and every concept. We'll be practicing each and every code. Okay, I'll be using VS Code for all the coding purposes, and it's your choice if you want to do an ideally or VS Code, whatever. Okay, so let's get started. So these are the handwritten notes I'll be providing in this series, and the first topic of our today is the genesis of Python. So what do you mean by genesis? Okay, so genesis is something related to genetics. Okay, so where the Python has derived from, how Python came to existence, who discovered Python, everything is covered in the genesis of Python. Okay, so let's get started. I'll be marking some important points in the note. It's your choice you want to mark. It's your choice you want to make it to your notice. It's up to you. Okay, so the genesis of Python. Firstly, always remember Python was developed in 1980s by Guido van Rossum. Okay, Guido van Rossum is the father of Python. Always remember this. So Python was invented in Netherlands as a successor to ABC language. Now you'll be like, what is ABC language? ABC language, yeah. ABC language, like Python first coding language nahi hai. Python is not the first coding language. Before Python, there were many other coding languages which used to exist, but due to some reason they were not more reliable to work with. So um, scientists and coders, whatever you want to call, they invented Python because Python is more reliable than ABC languages. Uh, I am sure that you must be familiar with C-level language, C++, Java, JavaScript, HTML. There are multiple of coding languages, but I think Python is that coding language that is easy to understand and human friendly. Okay, that's why. So it was developed in 1980s by Guido van Rossum in Netherlands as a successor of ABC language. Like you can see here, it is a high level language. What do you mean by high level language? High level language is something that, which is easy to understand by humans. It is easy for us to understand without explanation of anyone. So, okay, the communication with the system occurs in the form of text, which is easily understandable and readable by humans. Okay, now .py. What is .py? The most important thing. .py is the file extension for Python. Okay, for saving Python files. Like every coding language has its own file extension. So Python has its file extension, which is .py. Before running your any code written in Python, you must have to first save your file. For saving your file, you need to use the file name and after that .py. Okay. For example, I'll be showing you. Like this is my VS Code. Okay. Now I have written some code. Let's say Python. Okay. I have written code. A is equals to 3. Now what is a y? Everything will be, I'll be explaining further. B is equals to 4. C equals to A plus B. Now print B. Okay. Now first I have to save this file. So how I'll be saving? Go to file, save as. Now here demo. I'll be moving. I'll be like Python 1. Now file extension .py. What is .py? Okay, .py. Saved. You can choose your location where you want to save everything. Okay. Now the file has saved and now the code is ready to be executed. Now we'll be like, okay, Python. Okay. So the output 7 came in. What we assigned to A 3 and B 4. Now the sum has came to 7.
So now we understand how we save a file in Python. Okay. Now the first topic of our course is comments. So what are comments? Comments, like in real life, you can compare. You can compare it to comments like when we give some advice to someone, or when we um, give compliments to someone. We add comments to their looks, to their work, etc. So in Python level language, comments is a section of code that is not going to be executed. See, what do you mean by with this line? Comment is something which used to mark a section of a code. Okay, you will be writing a code, and now you want to add some note to it, so that if you are going to view this code after 2 3 years, so after seeing the comment you will be easily understandable that what this code is about, or the some other person who is going to work on this code and he is new to everything, he doesn't know what this code is about. So by seeing your comment added to that, he will be easily understand that what this code is about. The comment will never be executed, the whole code will be executed, but the comment will not be executed. Okay, so it is for the better understanding of code. Remember that. Now, there are two types of comments: single line comments and multi line comments. Okay, so what is single line comments? Always remember, single line comments start with a hash. Always with a hash. Okay, everything written after this on the same line is treated same line. Okay, because it is a single line comment, so same line is treated as comments. Now, we can take an example. Let's say here I have written this code and now I have to add a comment. Now, if someone doesn't know what is going on here, so I'll be writing hash sum of A and B. Okay, I'll be running this code again. See, again, here the previous output and here the current output. You should you will be thinking that कि sum of A and B क्यों नहीं आया. Sum of A and B इसलिए नहीं आया क्योंकि वो comment है. As we all know, comments are not going to execute. Okay, so this is how we write a single line comment. Hash, after that whatever you want to add to a comment. Okay, now dog string comments or multi-line comments you will be knowing. Okay, so these comments are written in double inverted commas. See, double inverted commas or triple inverted commas. It's your choice. It's up to you. What is double line comments? Now, I want to add a comment from here. Let's take double, and now I am taking sum of A and B, and I will be printing it. Let's say we'll be take this here. This is a Python language code, and आप इसको डबल टाइम ऐसे भी कोड कर सकते हो, या तो आप ऐसे 2 बार ऐसे हैश लगा लो, और आप इसको डबल इनवर्टेड कॉमर्स में भी कर सकते हो. इट्स अप टू यू. ठीक है, सो ये हो गया कमेंट्स का पार्ट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, वाइट स्पेसेस कैरेक्टर्स. सो व्हाट आर वाइट स्पेस कैरेक्टर्स?
It included space, tabs, and new lines. Space, tabs, and new lines. Okay. प्रॉपर यूज ऑफ वाइट स्पेस मेक्स पाइथन कोड मोर रीडेबल. अगर आप अच्छे से स्पेसिंग देंगे, हर चीज़ अच्छे से लिखेंगे, टैब स्पेसेस अच्छे से देंगे, न्यू लाइंस को अच्छे से सेलेक्ट करेंगे, तो आपका कोड नीट एंड क्लीन लगेगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट वो अच्छे से रीडेबल होगा. ओके, नाउ दिस इज इजली अंडरस्टैंडेबल, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं. Tokens, the most important topic. Tokens, everyone gets confused in what are tokens, what are the subparts of tokens, everything. Okay, so tokens basically contains of 5 elements in it: keywords, identifier, literals, operators, and delimiters. So these are the smallest building block of Python program. Okay, now what are keywords? First, keywords, reserved words. Some words which are reserved in Python, which are only reserved for coding purposes, that are known as keywords. For example, if, else, while, class, etc. Identifiers. Now, what is identifier? From the name itself, we can know what are identifiers means to identify something. Name given to a variable or a function is known as identifier. For example, river name. हमने एक रिवर नेम दे दिया, उसके आगे कुछ असाइन कर दिया, सो वो एक आइडेंटिफायर बन गया, राइट. लिटरल्स, कांस्टेंट वैल्यूज लाइक नंबर्स, स्ट्रिंग्स और बुलियन वैल्यूज. लिटरल्स मतलब हम अपने कोडिंग लैंग्वेजेस में भी नंबर्स यूज करेंगे, स्ट्रिंग्स यूज करेंगे लाइक हेलो, हेलो वर्ल्ड एक्सेट्रा. और बुलियन वैल्यूज, व्हाट आर बुलियन वैल्यूज? बुलियन वैल्यूज आर ट्रू एंड फॉल्स. बुलियन वैल्यूज के दो ही आउटपुट्स होते हैं, फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड वन इज फॉल्स. ओके. ऑपरेटर्स, symbols that perform operations are known as operators. Plus, minus, this is asterisk sign, this is used for multiplication, division. Okay. And delimiters. Characters, ये basically हर किसी को नहीं पता होता what are delimiters. Characters used for grouping or separating. Example, normal brackets, curly brackets, square brackets. Understood? So these are the main parts of tokens. Now, here starts the important topics. Okay, so first one is identifier. What is identifier? We have already read in tokens, right? Now we will be explaining it in a vast topic. So what are identifiers? It is the name, it is a name used to identify a variable, a function, or a class, module, or object. Okay. सो ये बेसिकली एक नाम गिवन होता है, जैसे हमारा एक नाम होता है, हम सबका अपना अपना नाम होता है, जिससे हम यूनिकली आइडेंटिफाई होते हैं. आइडेंटिफायर से वही नाम होते हैं जिससे वेरिएबल्स, फंक्शंस यूनिकली आइडेंटिफाई होते हैं. नाउ, पाइथन is a case sensitive language. What do you mean by case sensitive language? Case sensitive language is like something, if you have written one word of a code in small cases and other word in a big cases, then it will be showing an error. Okay. If you have written one word in small cases, write the entire code in small cases only. Okay. And for example, if you have made a variable like this, age, taken a big A here and age taking a small A here, both are different. Both contains its own unique values. So पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. आप एक भी वर्ड का अपर केस, लोअर केस चेंज करेंगे या एक स्पेस भी दे देंगे तो उससे भी वेरिएबल की यूनिकनेस चेंज हो जाती है, वो चीज अलग हो जाती है प्रीवियस चीज से. अंडरस्टूड? नाउ देयर आर रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स. Identifiers can be a combination of A to Z lowercase, A to Z uppercase, or numbers 0 to 9, and in fact underscore. Okay, underscore. अंडरस्कोर ही एक ऐसा स्पेशल कैरेक्टर है जो पाइथन में यूज होता है, एंड अदर देन दिस नो अदर स्पेशल कैरेक्टर्स इज अलाउड टू बी यूज्ड, ओनली अंडरस्कोर. नो एट द रेट, नो डबल अंडरस्कोर, नथिंग, ओनली वन अंडरस्कोर. Okay, it can start, identifier name can start with an alphabet or an underscore. Okay, remember identifier can be a name starting with alphabet or underscore, but not with a digit. Always remember that. It will be starting with an alphabet or an underscore, but not with a digit. Keywords,
cannot be identified, right? Like remember what were keywords? Else, if. Okay, the already reserved words which are only used for the purpose of coding will cannot be user identifiers. Like else, if we cannot use it identifier. Okay, an identifier can be of any length. Understood? Any length. Yeah, you're using 20 characters, you're using 16 characters. It's up to you. It's your choice how long or how lengthy you want to make your identifier. Now, double star. Wherever you're going to see a double star, always remember there is a very, very important point written there. Start an identifier with a single leading underscore. Single leading underscore is a private. What do you mean by private? Private means it's only up to some one person. Private. Okay. Next. Start with two leading underscores is strongly private. With two leading and two trailing for language defined special name. समझ आया? एक अंडरस्कोर होगा तो प्राइवेट है, वो नॉर्मल है, सिक्योरिटी है उसमें. डबल अंडरस्कोर मतलब स्ट्रांगली प्राइवेट हो गया, उसमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी. और जब हम दो ट्रेलिंग अंडरस्कोर्स किसी लैंग्वेज डिफाइन के आगे और पीछे लिखते हैं तो एक स्पेशल नेम बन जाता. अंडरस्टूड? नाउ व्हाट आर कीवर्ड्स? Keywords are reserved words with special meaning and purpose. Keywords एक special words होते हैं. Else, if, etc. etc. उनका अपना एक word है, अपना एक meaning है, अपना एक काम. Keywords cannot be used as variable names. पढ़ा हमने अभी ऊपर. Interpreters use keywords to understand the structure of a Python. Now, most important thing, interpreter and compiler दो चीजें होती हैं. हमेशा कंफ्यूजन होता है. इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर इज समथिंग विच इंटरप्रेट्स लाइन बाय लाइन. वो लाइन बाय लाइन कोड को चेक करेगा, उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा. कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर एक इंटायर कोड को एक साथ रन कर देता है. डजंट मैटर उसमें कोई सिंटैक्स है कि नहीं. ओके. इंटरप्रेटर टेक्स टाइम बट गिव्स एन एक्यूरेट रिजल्ट. कंपाइलर इज फास्टर देन इंटरप्रेटर, बट समटाइम्स एरर आ जाता है बहुत बार. ओके. नाउ एज यू ऑल नो कि पाइथन के वर्जन्स डेवलप हो रहे हैं और अभी भी डेवलप हो रहे हैं और अभी भी उसमें बहुत चेंजेस आ रही है, अपडेट्स आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है. पाइथन 2 has 32 keywords. Python 3.5 had 33 keywords and Python 3.7 has 35 keywords. अभी तक 35 keywords ही है मेनली, अभी तक और कोई कीवर्ड ने ऐड नहीं हुआ. A new keyword non-local was added in Python 3.5. जैसे 32 था, यहाँ से 33 हुआ, तो उसमें हमने एक non-local नाम का कीवर्ड ऐड किया है जिससे वो 33 कीवर्ड्स हो गए थे. ना तुम सोचोगे कि नॉन लोकल क्या होगा, ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे. अब दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपसे वाइवा में पूछा जाता है कि व्हाट आर ग्लोबल वेरिएबल्स. सो आउटसाइड ऑल फंक्शंस और कोड ब्लॉक्स कुछ भी लिखा होता है उसे हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं. कोई वेरिएबल अगर आउटसाइड द फंक्शन और द कोड ब्लॉक लिखा हुआ है, एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम. आप प्रोग्राम में उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो. ओके. Shared globally across multiple functions and processed for the entire execution of program. Understood? वही local variable क्या है? Inside a specific function, loop और block. इसमें क्या था? Outside the function और coding blocks. इसमें inside. Okay? Only accessible within a block where declared. यहाँ क्या था? Accessible from anywhere in the program. बट इसमें एक्सेसिबल सिर्फ तभी होगा जब हम उस एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर एरिया से डिक्लेयर करेंगे. ठीक है? ये आइसोलेटेड होता है, सबके लिए यूज नहीं किया जा सकता. ये सबके लिए यूज किया जा सकता है ग्लोबल वेरिएबल, बट नॉट दिस. क्रिएटेड व्हेन द ब्लॉक स्टार्ट्स एंड डिस्ट्रॉयड व्हेन इट एग्जिस्ट. स्टार्टिंग के लिए यूज होता है, उसके बाद खत्म हो जाता. नॉन लोकल, अब यहाँ पे हमने पढ़ा ना कि हमने नॉन लोकल को ऐड किया था. नॉन लोकल क्या है? Non-local is used to modify a variable in the nearest enclosing scope. कोई वेरिएबल है, उसमें एक अपने डाटा असाइन किया, उस डाटा को सबसे नियरेस्ट पे राउंड ऑफ करके देना, उसको हम नॉन लोकल कहते हैं.
अब है async एंड await पाइथन। ओके, async और await जब एडअप हुए थे तो वो क्या है? async defines coroutine and await pauses execution until the task is completed. Okay, this is what. Now variables. What are variables? ये last topic is video का. Okay, after that we'll be further describing क्या होते हैं variables and etc. Variables क्या होते हैं? Reserved memory locations होती हैं. Reserved memory location used to store values. हमने कोई चीज लिखी और उसके आगे एक डाटा असाइन कर दिया, उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। अब देर इज नो नीड टू फर्स्ट डिक्लेयर वेरिएबल। आप वेरिएबल लिखो, इक्वल्स टू डालो, उसमें डाटा इंसर्ट कर दो। द मोमेंट यू असाइन एनी वैल्यू वेरिएबल इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। अंडरस्टूड? आपने लिखा, इक्वल्स टू डाला, उसके आगे कुछ लिख दिया, वो ऑलरेडी खुद पे खुद डिक्लेयर हो गया है। ठीक है, वी यूज इक्वल्स टू साइन to assign variable values. Okay. Example. Marks equals to 40. ये वेरिएबल है, ये हमने असाइन किया वैल्यू के लिए इक्वल्स टू, और इसमें वैल्यू असाइन कर दी। लाइक इधर हमने क्या किया, मैंने बताया था ना आपको, a इक्वल्स टू 3। ए क्या है हमारा, जो हमने a लिखा है यहाँ पे, a क्या है हमारा? वेरिएबल है। वेरिएबल के आगे हमने इक्वल्स लगाया और उसमें डाटा स्टोर कर दिया, तो एक ये वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया। तभी मैंने यहाँ जब तक आप वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर देते हो, उससे पहले आप वेरिएबल को कोड में यूज़ नहीं कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जैसे नोट्स में लिखा हुआ है कि हम एक वेरिएबल लिखेंगे, इक्वल्स लगा के उसमें डाटा असाइन कर देंगे, वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया। तो यहाँ पे जब वो ए डिक्लेयर हो गया है, तब जाके हमने उससे कोडिंग में यूज़ किया है, राइट? अंडरस्टूड? तो दिस वॉज ऑल अबाउट वेरिएबल्स। यहाँ तक था सब कुछ, यहाँ तक वेरिएबल्स हो गया। आगे हम और कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। सीरीज स्टार्ट हो गई है, बेसिक्स आपको वेरिएबल कीवर्ड सबके बारे में नॉलेज हो गई है। ठीक है, तो आगे हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, इसके कोडिंग के साथ इसके सारे नोट्स जो भी हैं वो सब आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, इसलिए इस चैनल में बने रहें। तो लाइक शेयर कमेंट्स।